Humans are manifold. And that is the hepatitis virus or hepatotropic viruses. One type of virus is the serial virus, and other viruses are non-serial viruses. Now, serial viruses are hepatitis A, B, C, D, E, G, etc. And non-serial viruses are Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, HIV, Lassa fever virus, yellow fever virus, adenovirus, simplex, herpes simplex virus, or herpes, human herpes virus, Ebola virus, and many others probably. Remember, the dengue fever will also cause the jaundice. It will also cause hepatitis. And the non-viral infectious agents like pneumococcal pneumonia, leptospirosis, syphilis, Coxiella burnetii, toxoplasmosis, and important thing is the Salmonella group of the bacteria. That is entire group of fever. They are also involving the liver. Non-infections, alcohol, medications, Dilantin, isoniazid, ritonavir, chlorpromazine, and ATT. All ATT will cause the inflammation of the liver, can cause inflammation of the liver. The clinical terms, hepatitis is inflammation of the liver, the presence of the inflammatory cells in the organ tissue. Acute viral hepatitis symptoms that last more than 6 months. If it persistent, hepatitis, it took the 6 months, then it is known as the chronic hepatitis. If it is less than 6 months, it is called acute hepatitis. If it is massive hepatic necrosis occurs with impaired consciousness within 8 weeks of the onset of illness, it is called acute hepatic failure or acute fulminant hepatitis or hepatic failure. Cirrhosis is the specific terminology. Most of them is related with the fibrosis. No. The fibrosis is, hepatic fibrosis is another terminology. Only fibrosis occurs. And cirrhosis is the condition in which there are 4 things are necessary. Number 1, the evidence of inflammation. Number 2, the evidence of necrosis. Number 3, the evidence of regeneration. And number 4, the result of regeneration as fibrosis or nodulations in the liver. If you combine these things, then it is called cirrhosis. Otherwise, only fibrosis seen in the liver is not a cirrhosis. You have to prove that it is in the slide. You have seen the evidence of inflammation, the result of inflammation, that is necrosis, and the result of the necrosis is the replacement by the fibroblasts. If you see the thing in the slide, this is called cirrhosis. Fulminant hepatitis is a severe impairment of hepatic functions of the severe necrosis of hepatocytes in the absence of the pre-existing liver disease. Now, the chronic liver disease is the constellation of the different type of the diseases of the liver.
It is a misnomer at one time, but now it is accepted by the American College of Hepatology. This terminology is not one terminology. It is the constellation of the terminologies. So the hepatitis, the chronic hepatitis is included. The hepatic fibrosis is included. Cirrhosis is included in this. And hepatocellular carcinoma is also included in chronic liver disease. It also comprises the portal hypertension, which is the result of the cirrhosis, but it is also included in this. So chronic liver disease is the constellation of the terminologies, different terminologies of the liver diseases. The primary causes of the chronic liver diseases, hepatitis B and C, the more thing in Pakistan. You see these cases. Hepatitis C is about 13% to 14% in your country. Hepatitis B is about 7 to 8%. Alcohol can cause hepatitis. Drug can cause hepatitis. So there are many other causes of the chronic liver disease. It will cause a chronic hepatitis, and it will lead to the, I have already said, the pre-cirrhosis and fibrosis or cirrhosis, and will cause the typical complications of the cirrhosis afterwards. Now, hepatitis are the hepatotropic viruses. They are serial virus, these are called. A, its route is fecal-oral, always contaminated food, vaccine available. Hepatitis B, yes, okay, it is parental type of a infection. The route of infection is from the blood or the semen or the vertical that is in pregnancy. Vaccine are available. In hepatitis C, again the same as B, but here only one thing is important, and that is because of the mutation of the hepatitis C, still the vaccination is not successful. Hepatitis D is the Dumchalla of B. You know what is Dumchalla? It is infective. It is the disease which is, the virus is not complete virus. This is incomplete virus. It is defective virus. For the destruction of the liver with hepatitis D, hepatitis B should be present. So it needs B. Hepatitis D, if inflame the liver, it needs B. Hepatitis E is contaminated again with the food or the water, the fecal or route. So there are two viruses, hepatitis A and E, which are fecal-oral route, while B, C, D or G or others, they are all parental viruses. Now here all viruses are, you have seen, they are RNA viruses, except hepatitis B virus, which is DNA enveloped double-stranded virus. In as well as the viral hepatitis is concerning about if you are
seen this, that the presentation I already said, the fever, the fatigue, the loss of appetite, the nausea, the vomiting, constitutional symptoms, abdominal pain in the right side, discoloration, yellow discoloration, jaundice, that is dark urine, clay colored stool, and joint pains are possibilities. In the viral hepatitis, the course of the viral hepatitis, it will take time. Starting the fever or rash, the arthritis, it leads to the discoloration, jaundice, dark urine, malaise, anorexia, nausea is in 80%, and right quadrant pain is 60%, itching is 10%. Most of these are the malaise. Malaise are the main symptoms. You see in the pre-ectatic phases. The patient is ectatic, these symptoms are not seen usually, only anorexia is there. Well, the thing is this, the viral hepatitis is the leading cause of the carcinoma of the liver. This is very important. 1 million chronic carriers are present of hepatitis B and 1.7 million chronic carriers of hepatitis C are present in the Sindh province. And the delta hepatitis, that is hepatitis D virus, also found in the areas in a high hepatitis B prevalence. The study result revealing that the hepatitis D virus is co-infected with hepatitis B is about 28.3% in Karachi and overall in 62.7% in other areas of the Sindh. If hepatitis D occurs with B, then the treatment is difficult. Each year an estimated about 21,000 persons become infected with hepatitis A, 35,000 with B, and 17,000 with hepatitis C. A is the RNA virus. The structure is seen in front of you. It is in the Picorona group of virus. वो Picorona, the same group, इसके अंदर जो है the viruses are there, the echoviruses, the rhinoviruses, and the Coxsackie virus is the same group, the Picorona group of virus. Hepatitis A has an incubation period of about 28 days. About 15, our range is 15 to 50 days. Now it attacks the liver and definitely it destroys the liver parenchyma. And it will not lead to chronic inflammation. What condition it can cause? It is called the post-infectious period, convalescence. After convalescence, that is called post-infective period, the persons are not energetic as previously. And humans are the only natural host with hepatitis A. Already mentioned about its presentation is the acute illness, and remember one thing more, that it's infects the children, small children and growing children and young adults. It usually do not affect the middle-aged population and old people. It can only infect the old people or the middle-aged people via blood transfusion. वो भी इत्तेफाक से. Otherwise, hepatitis A is the disease of young population. The treatment is definitely supportive, and the diagnosis is exclusion in most of the cases. But now the anti-IgM can be detected in 5 to 10 days, and anti-IgG
ELISA is lifelong confers protection. It is a very protective antibody, anti-IgG of hepatitis A. So those people who have got hepatitis A never experience again this disease. So this is the serology which is shown in this diagram. How the disease infects the liver. It mounts in 1 week, and after 2 weeks, after 3 weeks, and it declines after the 4th week. It will take 6 weeks total. For the patient who have got this disease, should take rest, and more water should be taken, more carbohydrates should be taken, because it will take time. ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप मारेंगे और ठीक हो जाएगी. The risk groups are there in this, already mentioned about it. It is also, it can occur through the sexual transmitted diseases other than the fecal route. Vaccines are available, yes, and they can be given to the population, but they are costly. So WHO has not approved the routine vaccination program in their EPI programs. Hepatitis A vaccine, adult 95% seropositive after 1 dose and 100% seropositive after 2 doses. In children after 12 months and adolescents is 97% seropositive after 1 dose and 100% seropositive after 2 doses. So you can be saved very well with hepatitis A. These vaccination can be given to people who are travelers and the other people who are around the person who has this hepatitis A. They can be vaccinated. So the single antigen hepatitis A vaccine should be administered as soon as possible after exposure. So only 1 dose is given. It can be repeated if there is endemicity of the disease in the area. It can be repeated. Prevention is better than cure. A good hygiene, good sanitation, good personal hygiene, hand washing, and the heating habits. वो जो आप जाते हैं और खाते रहते हैं, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, आपको नहीं पता, you don't know how many people are affected with this virus. How many people are washing their hands? You don't know, because hygiene is poor. I have seen all cases of hepatitis A because the child has not been taken the food from the house to the school. वो जो बाहर जो ठेले वाले खड़े होते हैं वहाँ से वो खाया करता था. तो मेरी स्टडी है उसमें 80% से ज़्यादा लोगों को hepatitis A occurs because of the khwancha wala, the ठेले वाला, which are present around the schools. Now B is the only one virus, which is DNA virus. Now, currently the 8 genotypes A to H are identified. This is actually, hepatitis B is invented by or picked by the Australian scientist, not American scientists. The person is called, the full name I don't know, but the person is called
Dean. And Dean has analyzed this virus, and he said that it belongs to the Hep adena group of viruses, and it has got multiple antigens present. One on the surface, which is called hepatitis B SAG. One is core antigen within the liver cells. Envelope antigen, HBE antigen, that is called. Multiple antigens are present. And the particle which is he detected is called Dane's particle. These are the constituents which you are seeing of the Dane's particles. This is the structure of the hepatitis B. And the humans are the only known host, just like hepatitis A. It can present as an acute infection, as A, the same one. But the important thing about the hepatitis B virus is that it is the primary cause of the liver cancer. इसमें खास बात है वो याद रखिएगा, ये साइलेंट होता है हमेशा, अक्सर जो होता है ये साइलेंट पड़ा रहता है, ये टाइम लेता है, बहुत टाइम ले लेता है, और it actually protects itself in the Kupffer cells of the livers and the other reticuloendocrine system. So even after the liver transplantation, the new liver which you have transplanted will again be infected with hepatitis B. So hepatitis B का management is very difficult. Second thing, ये time नहीं देता आप. अगर ये हो गया किसी को chronic hepatitis ए कभी chronic नहीं होता, hepatitis B और C chronic हो सकता है, hepatitis E कभी chronic नहीं होता. So the B is concerned, तो B के बारे में बड़ा ट्रिकी रहना पड़ता है, ये याद रखिएगा. इसका मैनेजमेंट should be started, and according to the American College of Hepatology and Gastroenterology, the antiviral drugs should be given for more than 5 years, and some studies show more than 10 years, and some studies show for whole life. If you have to want to prevent from the carcinoma of the liver. Its incubation period is long, 6 weeks to 6 months. It is present in the lower concentration and the other body fluids, semen, vaginal secretions, wound exudates. It is present. It is highly infective virus, remember. But its root is parental. ये नहीं है कि आप कहें कि जी खाने पीने से हो जाता है, फीको और रूट से नहीं होता ये, अनलेस के मुंह में अगर किसी के अल्सर्स हों वहाँ से चला जाए, ये और बात है. तो in adults only approximately half of the newly acquired hepatitis B infections are symptomatic, and approximately 1% reported cases result in acute liver failure and death. बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि they have got hepatitis B. In my studies, about 60 to 70% cases in which I have seen the chronic hepatitis B, there was no history of the jaundice before. So ये बड़ा मसला है, इसलिए screening is necessary. The diagnosis is done by doing the surface antigen first. अगर आपको वो नहीं मिलती तो फिर जो है ना आपको जो है ना एंटी HBC जो है ना IgM देखना होगा. कोर एंटीजीन जो बताया था आपको, कोर एंटीजीन
आपका जो है वो IgM देखना होगा, इसलिए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो वैनिश्ड, इट विल बिकम मैनेज्ड फॉर फ्यू वीक्स, ये क्या लेता है विंडो पीरियड. That is why we do the confirmation from the antibody to the core antigen, IgM. The core antigen is very important antibody against it. Is called the anti-hepatitis B core HBC, the anti-HBC IgM should be done. इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट 3 इसके पार्ट हैं. इसके अलावा हेपेटाइटिस एनवेलप एंटीजन एंड DNA polymerase. हेपेटाइटिस बी ई जो है, इट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस of the hepatitis B infection, and the hepatitis B DNA polymerase hepatitis BE antigen करा लीजिए. अगर पॉजिटिव है with ALT which is raised, it means that the person has been infected. And definitely in most of the cases it will cause chronic chronicity. जो अच्छी बात है इसके अंदर वो ये याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की जो एंटीबॉडी है, दैट इज कॉल्ड anti-HBS, is the protective antibody. In 90 to 95% cases will recover itself. 70% will cause the chronic hepatitis, and 30% can be involved with the hepatocellular carcinoma. बी का हेपेटाइटिस बी का जब तक मैनेजमेंट का ताल्लुक था, एट वन टाइम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पहले बताया आपको कि दिस इज हायर 45 to 160 days, एवरेज इज 120 days. Fever, malaise, headache, myalgia can be possible, but in only 20% of cases I said it. Otherwise, more than 50% infections are asymptomatic, and they come on screening. Complications are fulminant hepatitis and hospitalization, cirrhosis, chronic hepatitis, hepatocellular carcinoma, and death. As far as chronic hepatitis B is concerned, the overall risk is written here is 5%. In my studies, it is more than 70 to 80% who survived after this infection. वो आदमी तो 90-95% तो वैसे ठीक हो जाते हैं. वो जो 5% to 77% रह जाते हैं, उनमें से 80% लोगों को chronic hepatitis हो जाए. ये है, इसका मतलब ये है. So as the age grows, the disease chronicity and the complications are more as the age grows. Reservoir is human in this case, not animals. आप ये कहें कि मेरे एनिमल्स से मुझे लग गया था, ये ज़ूनोटिक डिजीज नहीं है. The thing is this, the risk factors of hepatitis B are again to man sex with the man, that is sodomy 24%. ये अच्छी खासी है. And heterosexual multiple partners 39%. IDU
डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट 16%, डेंटल प्रोसीजर्स हैं इसमें शामिल, अदर 5% इसमें जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हैं, अननोन, पता ही नहीं है, कोई इटियोलॉजी ही नहीं मिली आपको, इस 16%. It is one of the sexually transmitted diseases, I already told you. This is very important point of mine. अगर इसके साथ इन्फेक्शन है, ये देखिए, वो 2 इन्फेक्शन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है. वो लोग जो सोडोमी करते हैं, यानी कौम लूत की गुनाह करते हैं, उनके अंदर HIV के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और हेपेटाइटिस B के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. लिहाजा इन लोगों को B और HIV अगर दोनों साथ हो जाएं, उनका मैनेजमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और दूसरा मतलब ये है B का कि इसके साथ एक दुमछल्ला है, मैंने आपको बताया था, और वो है D. अगर इसका D भी है तो फिर हेपेटाइटिस B ज़्यादा सीवियर हो जाएगा. एक ज़माने में ना ट्रीटमेंट कोई था ही नहीं, इसका छोड़ देते थे. बाद में फिर इंटरफेरॉन से इसको मैनेज करते थे. बाद में जो है फिर इंटरफेरॉन के साथ जो है उन्होंने दूसरी ओरल ड्रग्स स्टार्ट कर दी. और थर्ड जो इसकी स्टेज है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मोनोथेरेपी इज सफिशिएंट, या तो इंटरफेरॉन लगा दें या एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं. अब जो है आजकल जो रिसर्च हुआ है वो ये हुआ है कि ओनली एंटीवायरल ड्रग्स ओरल शुड बी गिवन फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, not less than 2 years. It can be eliminated from the body if you will give these drugs, adonofovir and other drugs, tenofovir and entacavir, etc., etc. There are a lot of drugs. I don't want to discuss. In third year level, you should know that the antiviral drugs are effective, but they should be given for a very prolonged period of time. According to one study, it is 2 years, or according to another study, it is 3 years. According to the other studies, 5 years. And according to another study, recent study, 10 years. And in some people, highly risk patients, for whole life, one should take the antiviral drugs. Vaccines है इसके साथ जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मौजूद है, इट इज़ अवेलेबल. इट शुड बी गिवन एट द 0. पहले दिन लगा दिया आपने, उसके बाद 1 मंथ में लगा सकते हैं. आफ्टर 1 मंथ इट शुड बी रिपीटेड. और थर्ड डोज है या तो 3 मंथ में लगाइए या 6 मंथ में लगाइए, यानी टोटल डोज है 3 डोजेज लगाई जाती हैं इसके अंदर. कितनी लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, ये आपका काम नहीं है. इतनी बात समझने कि इसके अंदर जो है ना प्राइमरी है, प्राइमरी 2 है एंड प्राइमरी 3 है. अगर आप कर रहे हैं रूटीन इन्फेंट शेड्यूल, उसकी बात कर रहे हैं, या करते वरते नहीं है हमारे यहाँ. अमूमन होता ये है कि आपको लगवानी है, अगर 0 आवर पे आपने लगवा दी, यानी फर्स्ट डे पे, आफ्टर 1 मंथ लगवा दें और आफ्टर 3 मंथ्स लगवा दें. कुछ लोग जो है 6 मंथ को कहते हैं 6 महीने बाद लगाएं थर्ड डोज. यहाँ पर C इज RNA वायरस, ये जो है ना ये सामने जल्दी आ जाता है. ये ग्रुप ये जिसको इन्वॉल्व करते हुए फ्लावाई वायरस है, ये वही ग्रुप है, दैट इज सेम ग्रुप जिसके अंदर जो डेंगू वायरस भी शामिल है और येलो फीवर वायरस भी शामिल है. इट ऑलवेज इन्वॉल्विंग दी लिवर इन अ डिफरेंट वेज. रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका सेम है, बी की तरह है, पर इसमें यह है कि C की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, it will come very early
वो आप पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। बी को पकड़ना मुश्किल होता है, सी को पकड़ना आसान होता है। सी, इफ इट इज सी, then you can manage it acutely. It can be, it is the only acute hepatitis C which can be managed by antiviral drugs. I will repeat, it is the only one hepatitis C, in which the antiviral drugs are recommended according to the current medical diagnosis. Otherwise किसी भी acute hepatitis में कोई ड्रग्स नहीं देते। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में देते हैं। ये जो है parental route is, in this case the parental route is involved. It is not a fecal route. Through sexual, it is one of the sexually transmitted diseases. हाई रिस्क वही हैं कि जो लैब के अंदर काम कर रहे हैं, या जो सोडोमिस्ट्स हैं, या जो इंटरटेनर्स हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं they are at high risk. और जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जिनको रिपीटेड इन थैलेसीमिया मेजर फॉर एग्जांपल, उनको मजबूरन ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ रहा है, या आप ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, अगरचे स्क्रीन होने के बावजूद भी जो है जो हेपेटाइटिस सी हो जाता है लोगों। So the epidemiology is written in this slide. Via injection drug use is 60%. Unknown is 10%. Nosocomial healthcare worker perinatal 5%. Transfusion before screening 10%. स्क्रीनिंग के साथ भी होता है, स्क्रीन करने के बावजूद हो जाता है। या तो आपकी किट ख़राब है, एक्सपायर्ड है, या आपको करना नहीं आता, उसको स्क्रीन करना नहीं आता। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इट इज़ 15%. In Pakistan, 13% population has anti-HCV positive. And except chronic liver disease or hepatocellular carcinoma secondary to it is not known how much. Hepatitis C will cause definitely. इसके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी नहीं है, हेपेटाइटिस बी के अंदर है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी। इसकी जो एंटीबॉडी है वो प्रोटेक्टिव नहीं है। About 60 to 70% of the cases they develop chronic hepatitis, and about 15% to 20% of cases will develop hepatocellular carcinoma in most of the cases. तो सी की जो प्रेवलेंसी है वो इन कंट्रीज में जहाँ पे अनहाइजीनिक हैबिट्स हैं और जहाँ पे ये काम होते हैं जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे आप स्क्रीनिंग किए बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, और जहाँ पे जो है वो सोडोमी होती है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है ना हेपेटाइटिस सी होती है। और इंजेक्शन जो है यहाँ आप रूरल एरिया में तो किस तरह लगाते हैं कि एक ही सिरिंज से 10-10 आदमियों को इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो तो होना ही है। It destroys the liver very, very acutely, very severe infection. Hepatitis C. Diagnosis के लिए इसके पार्ट हैं याद रखें। Time is short. I can't go further. सबसे पहले जो है ना आप anti-HCV कराइए। If it is positive, अगर anti-HCV आपने कराया किसी भी मेथडोलॉजी से, सही लैब से जो कर सकती है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर आगे बढ़े। द सेकेंड स्टेज ऑफ द डायग्नोसिस इज कंफर्मेशन, दैट इज द क्वालिटेटिव पीसीआर एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव करा के देखें पीसीआर को, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्वांटिटेटिव करा के वायरल लोड देखें। फोर्थ स्टेज जो है ना उसमें ये करें कि आप इसका जीनोटाइप्स देखें कि कौन सा जीनोटाइप्स है इसका जिक्र आया है। ये 1 से लेके और 6 से ज़्यादा भी हैं, जिसमें से जो है ना 1 को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, 4 को 5 को भी बहुत मुश्किल है,
सबसे आसान जो है ना वो जीनोटाइप 3, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे एरियाज में से। मज़ेदार बात यह है कि वी आर लकी टू हैव गॉट द जीनोटाइप 3. So the antiviral drugs are effective in genotype 3. Although the genotype 1 and 2 or 4, they also respond to antiviral drugs. But the to easy management is genotype 3. 3A, B, C, D, E. Subsets of the genotypes. ये मालूम चला लेंगे तो आसान हो जाएगा मैनेजमेंट करना. And this is, if it is positive, अगर ये आपको पॉजिटिव आपको मिल जाता है, वायरल लोड मिल जाता है, जीनोटाइप पता चल जाता है, then you can go for the management. Management is antiviral drugs. At one time they देते थे interferons. Now they are not giving interferons. What is known as the non-interferon therapy, oral therapy. अब जो ड्रग्स जो देते हैं वो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, और वो बहुत सारी ड्रग्स हैं. क्लबीर है और क्लबीर है और दूसरी ड्रग्स हैं. ये आपके लिए नहीं है. When you come in the final year, we will discuss these non-interferon based therapies. ये बहुत सारी लिखी हुई है इस स्लाइड में. इन कॉम्बिनेशन में हम देते हैं इसको, और बात कॉम्बिनेशन इसके इतने अच्छे हैं कि उससे 3 months के अंदर ये बिल्कुल जो है ना वायरस को ज़ीरो कर देता है. यानी आप PCR कराएंगे आफ्टर 3 months तो वो नेगेटिव हो जाएगा. वो अब ये है कि वो जो है पेशेंट को इससे पहले ये हुआ था और उसने ट्रीटमेंट लेके छोड़ दिया है, या नए पेशेंट है पहली मरतबा आपके पास आया, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कितने दिन देनी है आपने. 3 months देनी है, 6 months देनी है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ऑलरेडी सेट जाहिर है कि लोगों को बताया जाए हेपेटाइटिस सी हाउ इट अफेक्ट्स. इट इज द पैरेंटल रूट्स. प्रिवेंशन करने के लिए जो है ना आपके पास वैक्सीन नहीं है. प्रॉब्लम ये है, देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द वायरस. अदर वायरस इज अ डी वायरस. इट इज अ इनकम्प्लीट वायरस. इट ऑलवेज इन्वॉल्व विद बी. ये बी के साथ इन्वॉल्व होता है, एंड जो हेपेटाइटिस बी है वो सीवियर हो जाता है. और इसका ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको लाजमी तौर पर इंटरफेरॉन लगा विद ओरल एंटीवायरल ड्रग देनी होंगी फॉर 9 months. अनदर वायरस ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉल्ड हेपेटाइटिस ई. Now this virus is again is the RNA virus and is through the fecal-oral route. ये अनहाइजीनिक पर्सनस में पाया जाता है. नंबर 1, वो अफराद जो खाने पीने के शौकीन हैं, जो ठेलों पे और इधर उधर खाते हैं, और वो अफराद जो हैंड वॉशिंग नहीं करते, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते. इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो जाता है. ये वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है. दैट इन प्रेग्नेंट वुमेन हेपेटाइटिस ई वायरस जो है, ये वायरस ज़्यादातर जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है ना सरात कर जाता है. इट पेनिट्रेट्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन. इन द एटियोलॉजी में इज मैनीफोल्ड. इसकी वजूहत कई हैं, but here it is not the time to discuss this thing. Why hepatitis E is important in pregnant women? The important is that if the pregnant woman is involved with hepatitis E, it is very severe infection. It can cause the abortion. It can cause the destruction of the liver. It can cause the acute fulminant hepatitis in pregnant women. Hepatitis E is the virus which is important in pregnancy. इसको डायग्नोसिस अगर आप बनाएंगे सेम इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, नोजिया, वोमिटिंग और डिस्कलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेपेटोमेगाली, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वगैरह. मोस्ट पीपल विद हेपेटाइटिस ई रिकवर कम्प्लीटली. जाहिर है फीकल रूट से होता है. इसका एक वेरिएंट है जो अभी दरियाफ्त किया गया है. इन 2 years बिफोर एक वेरिएंट होता है हेपेटाइटिस ई का,
वो जो होता है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है। अदरवाइज हेपेटाइटिस ई कभी क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं करता, ना सिरोसिस करता है। इसका एक वेरिएंट है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकता है, वो कार्सिनोमा ऑफ द लिवर कर सकता है। वो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि 2 साल पहले जो स्टडी हुई है उसमें ये पकड़ा गया। डायग्नोसिस अगर करना है तो इसकी एंटी एलाइजा कैसे कर लीजिए, एंटी आईजीएम कर लें, एंटी एचईवी और आईजीजी एंटी एचईवी कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो एच इंक्रीजेज जब शुरू होता है तो प्री एक्सपोजर होता है, उसके बाद ये 4th वीक में, 6th वीक में, 8th वीक में बहुत हाई लेवल पे जाता है, एएलटी बढ़ जाता है, और फिर ये जाके 8 to 10 मंथ वीक्स में जाके ये फिर नीचे आना शुरू होता है। टाइम लेता है ये, उसी तरह है सेम, बिल्कुल एक ही तरह टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम। और ये जो होता है ये स्टूल के अंदर जो है ना ये एस्किशन होती है, इसकी याद रखिएगा। इसीलिए हैंड वॉशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटामिनेशन ऑफ द फूड एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Sexually transmitted diseases may be very important. I have said that in pregnant women the case fatality rate can be high as 15 to 25%. Hepatitis E is associated with pregnancy. ये रिमेंबर करें, ये बार बार ध्यान में दोहराएं। हमारे एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम ही लोग रह गए हैं बिकॉज ऑफ दिस our habits are concerned. इसकी जो वैक्सीनेशन है उन्होंने दरियाफ्त की चाइना में, बट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए नहीं देखी। ओनली दी हैंड वॉशिंग एंड दी गुड हाइजीन